तमाम दोस्तों को बहुत बहुत आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम। मैं इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। हम माफ़ी चाहते हैं कि कुछ वक्त थोड़ा सा गुजर गया और हमने 6 बजे की बजाय इसको 6:04 पर शुरू किया है। गंजन शाह साहब का थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो आए नहीं। हम उनको जानते हैं ओपी शाह के नाम से, लेकिन वो पहले से मौजूद थे। ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो सूरत हाल बड़े सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की आज़ादी के वक्त से जारी है, वो उसका कोई रास्ता, कोई मुनासिब रास्ता नज़र नहीं आता। एक ही सब कॉन्टिनेंट है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का कल्चर है, और हमने उस कल्चर को, उन लोगों ने सदियों एक साथ मिलकर गुजारा है। ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि गुज़िश्ता 74-75 साल जो हैं, उसमें हम अपने उस मसले को, जो दो इंसानी बिरादरियों के दरमियान में कायम होने चाहिए, हम उस मसले को हल नहीं कर पाए। अफसोस की बात है। लेकिन हमारे दरमियान में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मुसलसल बिला रुके हुए, बिला थके हुए इस मामले पर, जो कि इंतहाई संजीदा है, अपने दिन और रात उन्होंने इस मौजू पर लगाए हैं। यह आसान नहीं है, ये मौजू कतन आसान नहीं है। इन दोनों ममालिक के दरमियान में गुफ्तगू करने के हवाले से बहुत मसाइल, बहुत मुश्किलात और बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। मैं पाकिस्तान में उन सारे दो बुज़ुर्गों को, जिन्होंने इस फिल्म की रिवायत डाली कि हिंदुस्तान के सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, वहाँ के लोगों के साथ मिलकर, और उन लोगों को जिनको इस बात का एहसास है, जिन्होंने तारीख से इस बात को समझा है कि ये तकसीम जो है, इसने इंसानों के दरमियान तकसीम कर दी, सिर्फ ज़मीन के दरमियान तकसीम नहीं की। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कि मैं चाहूँगा कि मैं ओपी शाह साहब का एक तारुफ करवाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। और हमारा ये जो इज्तिमा है, ये हम साल में कोशिश करते हैं कि एक मरतबा हो जाए। हुआ ये है कि कोविड की वजह से हमारे जो तरतीब थी इन इजलासों की, इन लेक्चर्स की, वो उस तरह से नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा 20वां हमजा अलवी डिस्टिंग्विश लेक्चर है। इसके लेक्चर के लिए ओपी शाह साहब को से हमने रिक्वेस्ट की थी। ओपी शाह साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को बहुत अहमियत दी, और उनकी ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो पाकिस्तान आएँ। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, वो जो हालात हैं उसमें उन्हें वीज़ा नहीं मिल सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा या किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा तो हमारे ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई कमी वाक़ हो जाएगी। ओपी शाह साहब आज हमारे साथ बैठे हैं। 20वां हमजा अलवी डिस्टिंग्विश लेक्चर है। इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इसको मुनक़िद करने वाला इदारा है, जो हमजा अलवी साहब की हयात में 2 मरतबा, इसीलिए हम इसको डिस्टिंग्विश लेक्चर कहते हैं। दिस इज़ नॉट अ मेमोरियल लेक्चर, दिस इज़ डिस्टिंग्विश लेक्चर। और हम इसको उनकी ज़िंदगी में हमने शुरू किया। वो इन लेक्चर्स में पहले में शरीक हुए। वो इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के डायरेक्टर थे। फिर उनके बाद वो बीमार हो गए, तो सेकंड लेक्चर में वो नहीं आ सके। बट उसके बाद हमने इन लेक्चर्स का सिलसिला जारी रखा। आज समझिए 20वां या 21वां साल हो गया है
हमें लेक्चर्स को बाकायदा मुरतब करते हुए, इसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बरतानिया, अमेरिका, दुनिया जहाँ से जो है वो स्कॉलर्स ने आकर अपने पेपर्स को पढ़ा। हम पेपर्स को प्रिंट करवाते हैं ताकि वो एक यादगार रहे, और लेकिन इस दफ़ा के पेपर में शायद इस बात का इम्कान कम है। कोशिश तो हम फिर भी करेंगे अगर ओपी शाह साहब जो है वो इस मामले में कुछ अपने आप को सहल करें। हमजा अलवी साहब, इर्तिका के बारे में मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि 1991 में मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए कि मैं लिखी तहरीर में से कुछ चीज़ें अक्सर कर सकूं कि इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तरक्की पसंद सोच का हामिल ऐसा इदारा है जिसका मतमे नज़र लोगों में समाजी शऊर और नाक़िदाना नुक्ते नज़र पैदा करना, मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली समाजी, सियासी, माशी सरमियों से आगाही देना, ताकि वो तंग नज़री और इंतहा पसंदाना रुझानात और रवैयों को जान सकें और इस्तेहसाली क़ुव्वतों के तरीक़े कार को समझ सकें। इस इदारे के क़याम की जानिब इब्तदाई कदम उस वक्त उठा जब तरक्की पसंद सोच के हामिल दानिशरों की जानिब से एक तंजीम का इजरा किया गया 1993 में। और इसमें एक्टिविस्ट भी थे, इसमें स्कॉलर्स भी थे, इसमें रिसर्चर्स भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो है वो तलबा भी इसकी तश्कील में जो है वो बराबर के शामिल थे। और उसका मकसद यही था, जो मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, कि इसका मकसद जो था कि वो इस बात की अशद ज़रूरत को पूरा किया जा सके कि गैर सरकारी, अवाम पसंद और समाजी उलूम की तरवीज और तरक्की के लिए कायम किए गए, जो जिसका कि किसी सियासी पार्टी से कोई वास्ता ना हो, फिक्री सतह पर माशरे में फैली हुई मजहबी शिद्दत पसंदी और जागीरदारियत की बाकियात को कमा हक़्क़हू मुकाबला कर सकने की सख्त जो है वो रखता हो। इसका मकसद माशरे में अक़लियत, खिरदमंदी, जमहूरियत, मसावात, इंसानी हुकूक़ की तरबियत। इर्तिका इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम अहम समाजी, माशी, सियासी और इल्मी और फ़िक्री मौज़ूआत पर मुज़ाकरे, सेमिनार्स, लेक्चर्स और कौमी सतह की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें हम अहम अहलुर राय और साहिबान इल्म दानिश को कौमी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू के लिए मदऊ करते हैं। इर्तिका इंस्टीट्यूट के तहत बाकायदगी से मुनक़िद होने वाले खुसूसी लेक्चर सीरीज़ के तहत हर साल हमजा वाहिद यादगारी लेक्चर और हमजा अलवी इम्तियाजी लेक्चर का इनेकाद होता है, जिनका आगाज़ बितरतीब 2001 और 2002 में किया गया। ये एक बहुत कोशिश थी मेरी कि मुख्तसर तारुफ जो है वो आपके सामने हो सके इर्तिका इंस्टीट्यूट का। इर्तिका इंस्टीट्यूट ने जब हमजा अलवी साहब, जो कि एक बहुत जय्यद आलिम थे और मार्क्सिस्ट फ़लसफ़े पर जिनका एक बहुत अहम हमें भी सुनाएंगे। प्रॉब्लम है, नेट की कोई प्रॉब्लम है? जी लगता है ऐसे। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं, सिवाय के और किसी और बाकी सबकी आ रही है। नहीं होस्ट का ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम करे, उनकी प्रॉब्लम को हल करे। जी 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 मेरे ख्याल से होस्ट जो है वो बोले चले जा रहे हैं। कोई उनसे ये बताए कि जी आपका तो माइक ही म्यूट है। सर तो चाइना में है, चिराग लेके, कौन बताएगा? मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ बता दीजिए। मैं बताता हूँ, मैं कॉल कट करके बोल देते थे उन्हें।
मतलब ये बोलो कि करीम साहब की आवाज नहीं आ रही, राइट? नहीं, उनसे बोलो क्या कहते हैं वो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बोल होगी। रहे हैं चुप। शाह साहब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चलिए लगती है वहाँ पे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। जी जी जी। इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम। शाह साहब मैं could I request you on behalf of the host कि आप अपना थोड़ा सा जो है ये वैसे तो लोग आप जानते हैं, आप अपना जो है ना थोड़ा सा मजीद तारुफ और जो आपकी हालिया दिनों में कोशिश रही है और आपका विजिट भी रहा है कश्मीर का, तो ये इन द मीन टाइम लेट्स यूटिलाइज द टाइम। ये कंप्लीट कर लें अपनी बात, फिर कहें देखिए तो अब ठीक मेरी रहेगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? आई एम रियली सॉरी। कुछ अब आए, नो प्रॉब्लम, मैंने कुछ नो बात प्रॉब्लम की सर, है, आपकी आवाज। वक्तन मैं उन पे बात करता रहा हूँ, तो उसका अब मैं उसको कोशिश करूंगा कि हमजा साहब के बारे में बात को मैं लपेट लूं कि उन्होंने फिर अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में गुजारा। पाकिस्तान में उन्होंने जो है वो topics upon which his essays continuously remain under discussion in foreign universities. Kaleem were साहब, the nature of state in Pakistan, Kaleem bureaucracy साहब, and the dynamics of armies' superiority, supporting countries' relations with powerful and capitalist classes. Professor Hamza Alvi analyzed apparently powerful capitalist classes, helplessness against the state in historical context. In last 10 to 12 years, Hamza Alvi wrote in continuity upon 3 more issues, including ethnicity, religious discrimination, political discrimination, and discrimination against women in subcontinent. मैं इस पर मतलब बात खत्म करता हूं और मुझे आप थोड़ी सी इजाज़त दीजिए। हमारे एक बहुत मोहतरम साथी हैं प्रोफेसर एजाज अली कुरैशी साहब, उनको इस इजलास की सदारत करनी है। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामशोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। अब रिसर्च से उनका ताल्लुक़ है, किताबें मुरतब करते हैं, न सिर्फ मुरतब करते हैं बल्कि ओरिजिनल किताबें लिखते भी हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेहरबानी करें अपनी जगह पर प्लीज़ तशरीफ लाएं। आप जब सब मैं उस सब आ जाइए। आप कुछ कह रही थी। अब मैं बात करना चाहूँगा, मैं बात करना चाह रहा था ओपी शाह साहब पर, मगर मुझे लग रहा है कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए ओपी शाह साहब पर। ओपी शाह साहब एक इंस्टीट्यूट है अपनी 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 दानिश में, और मैं उनके बारे में अगर कोई बात करूं तो शायद भला ना लगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ओपी शाह साहब जो हैं वो जिंदगी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर जो है वो अपना वक्त लगाते हैं और बहुत उनका बड़ा नाम है इस शोबे में भी। लेकिन उसके साथ साथ वो हमेशा से 1967 से जो है वो एक एक्टिविस्ट के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं। कलकत्ता की खूबसूरत, बंगाल की खूबसूरत सरजमीन से ओपी शाह साहब का ताल्लुक़ है और हमारे दिलों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान क़ुर्बत को बढ़ाने का जो काम वो और यहाँ पर हमारे दोस्त कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे दिलों में उनके लिए बहुत प्यार और बहुत इज्जत और बहुत सारी जगह है। उनका एक सेंटर भी है, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। ये भी हमारी तरह सेमिनार, डिस्कशन, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर जो है वो गुफ्तगू करवाता है। तो मैं अब जो है वो आपसे यही आप ओपी शाह साहब को मैं दावत दूंगा
उनको इनवाइट करूंगा कि ओपी शाह साहब जो है वो अपने गुफ्तगू का लेक्चर का जो है वो आगाज करें, प्लीज। मिस्टर प्रेसिडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ कुछ समय गुजारूं, and I'm really grateful to each one of attending this meeting. This meeting is organized to celebrate the life and work of Hamza Alavi Sahab, who was not only an accomplished academic but also a very eminent activist. I am not a scholar or an expert on strategic affairs, but I'm an activist. Let me share with you some of my impression in a telegraphic language so that we have ओपी शाह साहब, आपकी आवाज अव्वल तो बहुत खराब आ रही है और अब वो आना भी बंद हो गई है। I know, of course, you know O.P. Shah. Let me and let me iterate some of the events since then, which शाह साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आपकी गुफ्तगू हम बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत टूट कर आवाज आ रही है। तो कलीम साहब, अपना नेट जो है वो कलीम साहब आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें ताकि वो क्लियर हो जाए। कलीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कलीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कलीम साहब जी, कौन सा बात I कर think the issue is कलीम अरविंद साहब बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरविंद शर्मा साहब बोलिए आप जरा, ताकि टेस्ट हो जाए। जी, मैं कलीम साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट का इशू जो है वो आपके तरफ है। बिल्कुल ऐसे सुन पा रहे हैं। मैं भी बहुत आराम से साफ आवाज आ रही है। मैं भी कराची में बैठा हुआ हूँ और आवाज बहुत सही आ रही है। कलीम साहब, शायद आपके इर्तिका इंस्टीट्यूट में कोई मसला है, वहाँ आवाज नहीं पहुंच रही। let me continue then. Yes, please carry on, sir. The peace constituency in both India and Pakistan is very strong. It exists in both countries. Each time that I visit Pakistan, I find the number of people seeking peace and better relations with India is on increase. So this is a positive sign. Although our relations at the moment are not very well, but the people at large want the relations to be better and situation to improve. This is a very important feature. Secondly, both in India and Pakistan, people have faith in secularity. If you look at the statements made by Pandit Nehru and Muhammad Ali Jinnah,
Any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. You find similar approach. If we build relations based on this approach of Muhammad Ali Jinnah Sahab and Pandit Nehru, and then supported by Gandhi ji, who used to say time and again, respect for all religion, sarva dharma sambhav, that could be a basis that would help us in improving our relations. That's one aspect that we need to remember. Look at the recent statement of General Vajpayee. He's seeking peace. He's seeking better relations. Can we not work on statements of this kind? General Vajpayee made excellent statement, which was well received in the subcontinent. We need to work on this kind. Then the ceasefire, which exists for more than a year, which is hardly any violation. Now that ceasefire has improved the quality of life of people on both sides of the border in Jammu and Kashmir. Now, such things help us in creating a climate of trust and confidence. Let me also share with you one or two incidents which I have noticed or I have experienced in my 30 years of association, Indo-Pak relations. Let me share one with you which happened in April 1992. I was convener, coordinator, leader of the Indian delegation, which was on a visit to Islamabad. And we had a 3.5-day dialogue. One day we were supposed to call on the President of Pakistan, a courtesy call on him. We got the message a little before we were supposed to go and meet him that he is expecting a foreign delegation. That is why the time has to be changed. I remember the remark of former Prime Minister of India, who was one of the delegates, Inder Gujral, saying that hum log bhi to foreign delegates hain. Now from this you can imagine when Indian and Pakistani think of foreigner, unke dimag mein perhaps gori chamdi wala hi foreigner hota hai. You know, between them they still wo to desi hai. Now, these are the things. I also remember another thing which happened with me. Also, in 1991, I was in Lahore. I went to meet the lawyers of Lahore High Court, the members of the Bar Association. When I was returning, I was in a hurry because I had a commitment to meet Arif Nijami, the eminent editor of an important newspaper. And somebody just stopped me and I was introduced to him. I could not do him for more than a minute and a half because I was remembering my commitment with Arif Nijami Sahab. After conversation of a minute and a half on the road, he told me, "बहुत सालों बाद बड़ी which I speak is similar to Urdu. He must have come from the northern part of India. तो उनको लगा होगा कि शायद
ये यूपी के हैं और वही भाषा बोल रहे हैं। जो सुनना चाहते हैं। So such things indicate the kind of such thing can help in creating that trust, in creating that climate, build up on something which positive. Let me come back to some of the irritants which are matter of concern to each one of us. The trade between India and Pakistan is not worth mentioning. If we can certainly increase it by 1000%, which will be beneficial both for India and Pakistan. The relations between the two countries, both the people of the India and Pakistan are suffering on this account. Delhi does not have a Pakistani High Commissioner for more than 2 years. Islam does not have Indian High Commissioner for more than 2 years. It's not a very desirable thing. We need to. There are hardly any people-to-people contact in last 2 years. The visa regime is not liberal at all. Not many people could visit India or Pakistan, whereas the desire on both sides, the people from Pakistan would like to come and visit India, and people from India would like to come and visit Pakistan. मुझे जब ये एक सोच रहे थे, we were working out कि कुछ पाकिस्तान के डेलीगेशन आएंगे जो हमारी किताब का रिलीज हुआ था, और फिर हम डेलीगेशन पाकिस्तान जाएंगे, इसकी वर्कआउट कर रहे थे, फिर कुछ कारणों से वो पोस्टपोन हुआ है, आई वुड नॉट से कैंसिल हुआ है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे इतने इंडियन फ्रेंड्स ने कहा कि साहब पाकिस्तान मुझे भी ले जाना है। अगर पाकिस्तान के मित्र चाहते थे कि 4 लोगों का डेलीगेशन आए, आई हैड एटलीस्ट 50 रिक्वेस्ट फ्रॉम माय इंडियन फ्रेंड्स who are well-meaning कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान विजिट करें. So these are things that we need to work on. Unfortunately, we have been using international forums to complain against each other, almost abuse each other. Can't we have some kind of a dialogue between us, and cannot we as good neighbors settle affairs through meaningful, serious, sincere dialogue? That is what is needed. There is trust deficit. We hardly can meet each other. We hardly meet each other's. You don't take the statement of a leader of the country. People attending this meeting need to work hard in helping to create a climate of trust and confidence. Unless we are able to do that, it would be difficult to work. The media has not been playing a productive and positive role. We need to do something. A section of media has been misusing the freedom of expression, which it is expected to exercise. They have been misusing it. And instead of creating climate of trust and confidence, they have been spoiling the atmosphere. Now, how do we deal with this critical situation? The civil society just should not sit idle and criticize, but has to find ways in which we have to work and create that dialogue with media also, that
they work and act with the responsibility and help the situation productive. There have been hardly any cultural or sporting events. I remember as a Calcuttan, I was very happy to hear from Shoaib Akhtar that I'm working for my home team. You know, when he identified himself as a player of the Calcutta Knight Riders in the IPL league. So he was playing for the Calcutta Knight Rider as if he was playing for his country. He says, it's my team and I must work hard and make sure that my home team wins. Now, the players of Australia and UK and New Zealand could come and play in the IPL in India. Why can't the extremely competent player Pakistan play in India? So we need to work in that direction. The cultural already exists. And whenever we have an artist from Pakistan, a tremendous amount of response. People come in large number and attend that event. So these are some of the irritants which we need to take care of. Then there are major problems, and we can't meet those problems. Whether it is Jammu and Kashmir or terrorism, have to find a solution. We can't say that no problem exists. There is a problem. And the answer lies honest and each side has to understand and appreciate the compulsions, limitations of the other. Find out what is feasible, what is desirable. We have to create a win-win situation for everyone. We know that and we also to ensure that there is a national consensus in each country. I have heard former Foreign Minister of Pakistan saying many times that 4-point formula that he has worked has the support from entire country. He said the Pakistani army was also on the board, and he says his Indian counterpart, he says when he came to Delhi for the release of his book in which he has dealt with 4-point formula, and I was also present. And I saw and Dr. Manmohan Singh also sitting in the audience, and they also did not say a word after the meeting that they don't agree. And Mr. Kasuri mentioned in that meeting that this 4-point formula discussed and we were near agreed upon, but he said there was substantial satisfactorily, then we would have been able to find out a solution. So what we need to do is, it is not that 4-point formula, but through back channels and track to and efforts, we may but after all, things have to be settled. Reserved laws, although both of us are nuclear nations, but they can't solve problems. So what we need to do is, through a continuous dialogue which is uninterruptible, and uninterrupted dialogue need to happen. And once that takes place, and if there is a political will on both sides, and if the civil society does not
think that their duty is only to criticize the politicians, but if they also take some responsibility and try and work out something which is acceptable to people in large. We all know that the position which the various governments have taken and various groups have taken, they can't be reconciled unless each one is prepared to sacrifice. Each one is prepared to understand the compulsions and limitations of the other side. Once that happens, then we'll be able to find out some kind of a solution which we can term as win-win for everyone. And that is absolutely essential. I remember once when I was Oh, is it all right now? Yes, sir. Yes, Can sir. It's you all hear me right now. Oh, जी ठीक है. चलिए carry on, sir. Carry on. हाँ. तो उन्होंने कहा साहब आपके तो ये और ये न्यूज़पेपर और ये चैनल बहुत प्रोवोकेटिव. तो मैंने उनसे कहा कि साहब जैसा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको भी बुलाइए लाहौर में, उनका भी इंटरव्यू लीजिए, या आप बंबई दिल्ली जाके उनसे बात करिए. After all, that is what is needed. It is true that media plays a very important part. We can't forget the role of media in the Arab Spring. We will also not forget the role which media played in the Rohingyas case. And one was positive, the another was very disturbing. But media is important. It can't be. That is why a constant pressure dialogue with media is important. The government has to be requested to give visa liberally, both India and Pakistan. When you find large number of people interested in visiting each other country, after all, and if you have faith in people, the people-to-people contact in the right climate in which the solution problems can be resolved. If you just shut people and people can't come and visit each other's country, then solutions cannot work out. Because when you see each other, you come to a different mind frame, you think differently. I remember many times, and I've noticed this, a lot of people issue provocative statements, and quite often based on wrong fact. Once you have regular contacts, once you have dialogue, then you will find a different situation. I wish that I could organize a meeting in which I can invite Mr. Kasuri and all of you and Mushahid Hussain, Javed Jabbar Saab and many others to Srinagar for a discussion. That would create a situation in which we'll build up that climate of trust and confidence. We'll have each other. And that's very important. Why, when you can hold a dialogue in Delhi, why can't you hold a dialogue in Srinagar? And when you take, or Muzaffarabad for that matter. So
this is essential, that people-to-people dialogue with certain amount of preparation would help. May I, and I would like to hear comments, just share with you 4 important aspects of Gandhiji's life, which, if we remember, the people in the civil society and people who think about it, perhaps would help us in improving the situation. One, Gandhiji, there was no difference between priest practice. उनकी कथने और करने में कोई अंतर नहीं था. ये बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक लाइफ में है, you say one thing from this stage, but you practice another thing. You don't do what you say, you do something else. So that pollutes the atmosphere. Non-violence. We have noticed wars have not provided any solution to us. Violence is counterproductive. It will never help in finding a solution to any problem. So the non-violence is something which we need to in all our dealings. If we do so, perhaps many of the issues which we find intractable today can be resolved. Truth. There is many of us, and I have noticed, and it's not one group in India or in Pakistan, it's widespread, that many people who are playing an important in public life, somehow in their writings or statements, always resort. That becomes difficult. Your every action has to be based on absolute truth. And once the absolute truth is applied, then there would be a difference in the overall atmosphere and climate. The Gandhiji's last, which is the talisman, Gandhiji's most important mantra. He used to say, whenever you are in doubt about the course of action that you should follow, think of the poorest man, think of the weakest man that you have seen in your life, and take the course of action which will help him. And if you adopt that course of action which will help the weakest man and the poorest man that you have seen in your life, you will take a course which will be beneficial to everyone. And if leaders of the civil society, the important actors of the media world and the political world, if they remember this mantra of Gandhiji and apply when they are in their job, we have a different world. I would like to thank you once again very much for inviting me and asking me to share some of my impressions, experiences. Thank you. Thank you. Thank you very much. May I ask the participants to raise their questions, and before that they can raise their hands so we can okay, thank you. Can we start question answer session? Shah Sahab, can we start question answer session? Mr. A.M. Vatali, please put your question. August gathering from Kashmir Valley, and I am the main stakeholder.
this is a very good exercise and very encouraging trend that you have initiated a dialogue between people and people. Unless and until such dialogues are instituted, then there will be a way out and some solution will be hammered out. ऐसी बात है कि मैं पर्सनली इस डायलॉग के हक में हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग हो, particularly on Kashmir and other relations, और कश्मीर के दोनों हिस्सों के लोगों के दरमियान डायलॉग हो ताकि समझाएं पाकिस्तान को, इंडिया को वगैरह। तीसरी बात यह है कि some solution has to be also hammered out by this August Institute, which is now working in collaboration with our great friend Prof. Shah. But it can also develop gradually, not immediately. So this is my point of view, that we should not jump to any conclusion that whether he is right or he is wrong, but we can even criticize each other. But main stakeholder, people of Jammu and Kashmir, the undivided state of Jammu and Kashmir, are the main sufferers. Nobody is bothering. Dialogues have been taking place between Nehru and Liaquat Ali Khan, between Soran Singh and Bhutto Sahab, between everybody, and nothing happened. Even foreign countries, great powers intervened, nothing happened, because every political party has their own stakes in both the countries. So it is better that there should be a people-to-people dialogue, and that will compel the powers to come together and sit down and settle the matter. Another question is, Pakistan is holding an opinion about Kashmir that they want Kashmir. India says Kashmir is integral part of India. So these two have to be reconciled in respect of Kashmir. And 4-point formula, which was referred just now to Prof. Shah Sahab of General Musharraf, and I am told that it was Ms. Manmohan Singh. And we are also told that Manmohan Singh was about to visit Pakistan and sign an agreement. And that is how his high school was being prepared, where he has studied in Pakistan. But what happened that Mr. Musharraf was removed because of certain situation in the country, and Mr. Manmohan Singh lost the election. Then again, the present lot of the leaders, they are also interested to settle the issue. As has happened, Narendra Modi visited Lahore, went to the house of Prime Minister Nawaz Sharif. But what was the reply? The reply was the bomb blast in Pathankot. So, as I said, until we discuss all these issues, third year, we cannot stop with this, that this thing has happened, why it has happened, so we stop talking. हमें dialogue को जारी रखना है, despite all these difficulties, and remove the irritants also. जो irritants बीच में इसको, they have got vested interest, maybe ideological, maybe material. So those interests are not allowing the people to come together. For the time being, the initiative taken by Irtiqa Institute of Social Sciences is a very welcome step, and we support it, and we hope that we will be discussing various formulae of Kashmir settlement. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now here is Dr. Jafar Ahmed. Please, Dr. Jafar Ahmed, please put your question. Okay, thank you very much. I'm here in Karachi, and I'm someone who teaches political science and history, and I'm very happy to have heard the lecture of Prof. Shah Sahab
and it's very encouraging. And I'm glad that he's such a committed person to the ideals of peace and harmony in subcontinent. I have heard Nirmala Deshpande Saiba. I have also heard Admiral Ramdas Saab, and I'm happy to see that torch of peace has not extinguished. It is still alive, and leaders of civil society like Shah Saab are carrying this torch. On our side also, we have people who are still struggling for people-to-people contacts, etc. We have lost Ayy Rahman Saab and Dr. Mubashir Hassan, but in our modest capacity, we people are still struggling for this noble cause. Here, I would like to raise one or two issues. For the last 30, 35 years, these efforts are being made, and they had their impact. The clientele of the peace project has increased, certainly. But we see that at the larger level, not much difference has taken place. Governments have become more and more, stubborn in their positions. And over the years, we have also seen that there have been a wave of rising, political assertion in India as well as in Pakistan, like in many other countries. In the past, the peace project was pleaded and professed by the liberal, secular, democratic forces. But unfortunately, these very forces seem to be at retreat for the last many years, and they have been overpowered, or it seems that the weight of the right-wing forces has increased. They have captured the state power. They have captured the media. So we are in a very different environment today. So I think that those who aspire for peace in subcontinent would do good if they search for new means to realize what we aspire for. Perhaps two things which come to my mind at present. There could be a good opening, because at present we do not see any opening from this. We don't see anything that could be taken as leading to a thaw between Indian and Pakistani relations. We have rightly mentioned that for the last 2 years, in the last 2 years, both countries do not have diplomatic, relations of the type normally they should have. So I think that in order to see how the ice could be broken, of course, the people-to-people dialogue should be resumed. But I think that we should also recognize that in today's world, the power of social media has become quite effective and decisive. So if we build social media context between the two countries and try to involve as many youth as possible, because in Pakistan, 60% of the population is below the age of 30 years. So I think that now our target group should be the youth of the two countries, and they should be brought on same platforms, and these platforms would be created through the social media. I also think that perhaps one more avenue that should be tried would be the avenue of overseas Pakistanis and overseas Indians. If in some way
convinced that their efforts could be very meaningful in ensuring peace in the subcontinent. And if they contact with each other outside the subcontinent, perhaps those contacts and those efforts, those movements can take the shape of seminars, which can take the shape of conferences. Those efforts could also make a difference, and they would give some dividend. So these offhand are one or two suggestions which came to my mind after hearing a very convincing and committed presentation by Mr. O.P. Shah. Thank you. Thank you. Thank you, dear. Is there any question? Zubaida Apa? आप लोगों में से कोई सवाल करेगा, कोई बात करेगा, कोई ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे? दोस्त जन्नत, आप बात करेंगे? नहीं? अच्छा, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, वो लोग जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, यहाँ हमारे ऑफिस में इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से जो ऑडियंस यहाँ इस वक्त हॉल में मौजूद है, वो बात को पूरी तरह से सुन या समझ नहीं पाई। इतनी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो लोग इंटरनेट पर हैं वो बात को ज़्यादा साफ और वाज़े तौर पर समझ सके हैं। उनमें से अगर कोई दोस्त जो है वो हमारी इस ख्वाहिश को यहाँ बैठे हुए ऑडियंस की कि वो कुछ सवालात जो है वो करें मज़ीद शाह साहब से, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। हमारे यहाँ अरविंद सहारन साहब हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो अगर बात करें तो बहुत बेहतर होगा। अरविंद सहारन साहब, अरविंद सहारन साहब, आप क्या कोई सवाल करना चाहेंगे? उनकी कमेंट्स सुनने में बहुत अच्छा होगा। अच्छा। अरविंद सहारन साहब कुछ? अस्साम, तुम कुछ बोलोगे? There are many names screen. Please request one of. जी वटाली साहब प्लीज बात कीजिए। आप माइक को नजदीक कर लिए वटाली साहब, माइक के जरा नजदीक हो जाए। मेरी अर्ज ये है कि जो नाम स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको बुलाइए और लेट देम कमेंट ऑन दिस। हैव यू हर्ड मी? भाई मैं एग्जैक्टली कलीम, अगर इजाजत हो तो। हाँ सदर साहब कुछ बोलें। हाँ आप बात कीजिए जी। जिनके नाम आ रहे हैं उनके तो बुलाइए उनको। ये वटाली साहब ने, मैं इन्हीं से शुरू करूंगा कि इन्होंने एक बात जो की कि आप तो यहाँ के लीडरान गुफ्तगू करते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के, मगर मेन स्टेक होल्डर जो है वो कश्मीर है, कश्मीरीज हैं। तो आई 100% एग्री कि यू आर बीइंग द मेन स्टेक होल्डर, तो कोई भी टॉक हो वो विदाउट ए कश्मीरी लीडर पार्टिसिपेशन वो मीनिंगलेस है, वो मीनिंगलेस है। जब वहां के अवाम की आवाज नहीं आएगी तो मीनिंगलेस है। और दूसरे जो मैं एक ये कहना चाहता हूं कि जो गुज़िश्ता दहाइयों में कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं, और जैसा कि शाह साहब ने कहा कि वो बीच में आके मुनक़ता हो गई, वो बिकॉज ऑफ द लीडर्स वेंट आउट ऑफ द सीन। तो अब वो डायलॉग तो जारी रहना चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि वो जैसे कि अक्सर हम सीरियल्स में देखते हैं कि वो सिलसिला जहां से मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है।
तो अगर हम उसको जो कि which was about to reach an agreement, if we start from that point and we go ahead, तो जो इतने सालों में काम हुआ है, that will not go to trash. That should be taken into consideration, or we should try to find out अगर कुछ थोड़ी बहुत अगर है तो कसर वो पूरी करके, और अब तो it is मतलब है almost 75 years that we are struggling to fight out the issue of Kashmir. मगर ये कि we have failed to do so because of various several reasons. तो ये तो एक पहलू है. Kashmir is the key issue. We should not forget that the Kashmir is the key issue. ये जो दोनों कुव्वतें हैं, स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडिया, हम कितने ट्रिलियन डॉलर्स इस पे खर्च कर चुके हैं अपने डिफेंसेस पे, इस पे, उस पे, बारूद पे, और अगर यही रकम हम जो है बारूद के बजाय बहबूद पे लगा दें तो वो कितनी तरक्की हम दे सकते हैं. जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए. तो वी शुड कंसंट्रेट के भाई हम बजाय इसके कि वेस्टर्न वर्ल्ड के मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस को चलाएं, हम अपने अवाम को जो है ना आगे बढ़ाएं, हम अपने अवाम की जिंदगी बेहतर बनाएं, और हम आपस के जो है ना हर जगह होता है, हर कंट्री में, कंट्री टू कंट्री होता है, सब जगह होता है. और जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि नेबर्स कांट बी चेंज, वी आर नेबर्स. अब ये हम पे हमारी चॉइस ये है कि वी शुड लिव एज ए गुड नेबर और ए बैड नेबर. तो हमें जो है इस सोच के तहत ने यहाँ के दोनों मुल्कों के अवाम पे तवज्जो देनी है, और जो पैसा हम जो है बारूद में खर्च कर रहे हैं वो हम इनकी बहबूद पे लगाएं, इनकी बहबूद पे लगाएं. आज हमारे यहाँ भी जो है 10 करोड़ के करीब जो है लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और इफ यू टेक तो इंडिया के अंदर भी तकरीबन सिमिलर हालात हैं कि वहां भी जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं. तो हमें फोकस उस पर करना चाहिए. अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम चीजें ये रिजॉल्व कर सकेंगे. अगर हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं होगा तो हम ये चीजें रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे. तो दिस इज ऑल आई हैव टू से. एंड वंस अगेन जो शाह साहब काम कर रहे हैं वो दैट इज कमेंडेबल. और ये कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट के सिलसिले में जो बात की है, तो वीजा रिजीम के सिलसिले में जो बात की है कि हमें एटलीस्ट वीजा रिजीम को जो है ना सॉफ्ट करना चाहिए ऑन द कश्मीर लाइन एंड ऑन अवर बॉर्डर्स आल्सो. तो ये हमसे जो पता नहीं हमसे वो यार हमारी आवाज नहीं पहुंचती है, लेकिन सब सुन रहे हैं. अगर अभी जो कमेंट्स हो रहे हैं, हमारा कमेंट तुम ये कह दो कि हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं जो इन्होंने कहा कि डायलॉग रहे और रहे, और ये भी एटलीस्ट हम लोग का जो मेन स्ट्रीम एक तरह से डायलॉग है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि देखिए हमारी तरफ भी वो शैतान बच्चे आप जो भी कहें यानी जो गड़बड़ करते हैं उनकी तरफ भी हैं. तो हम लोग उनको समझते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम लोग का डायलॉग नहीं. क्योंकि जो डिसलॉज हुआ था वो वही हुआ था ना जो बम्बई का सब हुआ था, उसी के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया. तो यही हमने we'll have to कमेंट है वो नहीं हो रहा है. हम अगर नहीं हमारा हम हमारी तरफ से कहते हैं कि भाई उनको प्रॉब्लम है. हम तो समझे थे हम नहीं पार्टिसिपेट, पता नहीं कैसे मोर्चा हुआ कि सबकी आवाजें आने लगी, लेकिन हम बीच में बोले भी तो हमें लगा कि कोई हमें नहीं सुन सकता है. तभी हम फोन करके बता देते थे कलीम को कि आपकी आवाज नहीं आ रही और सब. इसलिए अब हम छेड़ना नहीं चाहते, फिर शायद हम बिल्कुल ही ऑफ हो जाएंगे. इसलिए जुबैदा मैं अच्छा तो तुम लोग नहीं यार जुबैदा मुस्तफा साहब की बात जो है वो मेरी बात
मेरा ख्याल है कुछ अच्छा, थोड़ा सा ये जो है ना ये ओ, तो हम अच्छा, तो ये एक फोन एक तो दूसरे हमने को शायद कदीम को किया है, जो जो तुम्हें है रखा है तुम्हारे किसी पास को है आवाज उनका जाते हैं फोन। अच्छा, हम कलीम को कर दें। हाँ जुबैदा हाँ, आपका ये ओ, तो फिर ओपी शाह रहने साहब दो, कुछ हम बात बस करना कोई चाह रहे हैं। कमेंट था कि जो खुद जुबैदा मुस्तफा साहिबा हाँ ओपी शाह साहब बात करना चाह रहे हैं आपके हाँ, हवाले से, जरा उनको बोल लेने दीजिए कुछ। जी ओपी शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, शाह साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं अरविंद अरविंद जी से पहले शाह साहब आप, मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। मेरा नाम शुजा जफर है और मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। शाह साहब ने बहुत तफसीलन बात की। सईद जफर अहमद साहब ने भी प्रॉपर पॉइंट आउट हुआ कि हम लोग कहाँ लैक करते हैं और हमें कौन सी सेगमेंट को आगे बढ़ाना है। कश्मीर डिस्प्यूट है वो रहेगा, गन कल्चर जब तक दोनों कंट्री में है तो पीस का तो सवाल ही पैदा नहीं। और जो ये गन बनाने वाली 5 ताकतें हैं, 5 फैक्ट्रियां हैं, ये वर्ल्ड में पीस नहीं होने देंगी, ये आप मान के चलिए। अब पाकिस्तान की जो ताकत है वो उसका नौजवान है और हिंदुस्तान की ताकत उसका नौजवान है। जब ये दोनों नौजवान आपस में मिलेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, तो बड़ी चीजें जो है वो हल हो सकती हैं। क्योंकि आज का नौजवान, या चाहे वो पाकिस्तान का चाहे इंडिया का है, उसके दिल में दोनों के लिए बहुत नफरत है और ये जो सेगमेंट है ये मैटर करती है। कश्मीर एक डिस्प्यूट है, सब कहते हैं जी कश्मीर हमारा है, लेकिन हल नहीं हो रहा। अगर आप उसको लेके चलें तो आपकी पीस प्रोसेस जो है वो हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है कि वो हो जाए। सबसे पहले जो मेरा एक सजेशन है, गन कल्चर को बैन लगाना चाहिए और नो वार पैक्ट दोनों करें। हम बुजुर्गों का, एल्डरली सोसाइटी का यही रोल होना चाहिए कि नो वार पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शाह साहब ने बहुत कोशिशें की हैं। जम्मू कश्मीर में आके हमने श्रीनगर भी सेमिनार किए, वहां पर भी आके सेमिनार किए। वटाली साहब ने एक बड़े अच्छे पुलिस अफसर रहे हैं और ये पहले विक्टिम थे जो यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई। और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को एक चीज इंश्योर करनी चाहिए कि ये जो गन है, इस गन ने ना कि पूरे एशिया को, ना पूरे वर्ल्ड को घेर दिया और मुसलमानों का नाम के पीछे टेररिस्ट लगा दिया गया। मैं आप लोगों से छोटी सी मेरी गुजारिश है, मैं चाहूंगा कि इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। जो बदनुमा दाग हमारे ऊपर लग रहा है उसे हटाने की जरूरत है। जब हम अच्छे होंगे तो दुनिया हमको सलाम करेगी और फिर पीस भी आएगा। नौजवान को इन्वॉल्व कीजिए, गन कल्चर को हमें बंद करना है, चाहे वो किसी भी तरह का है, उसको हटाना है। बाकी मीडिया का रोल आप देखते हैं, मीडिया भी तो आज नेगेटिव चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे वो इंडिया का। पाकिस्तान की हालत देखिए, वहां तो लोटे का हिसाब किताब चलना शुरू हो गया है। ये मैं पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मैं उस बात पे सईद साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, आई एग्री विद हिम। नौजवान को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, नौजवान को अपना कल्चर दिखाने की जरूरत है। 47 में जब आजादी की जंग हुई तो हम दोनों फरीकों ने इकट्ठा लड़ा था और आज वो कुव्वतें जो है फॉरनर है वो हमको लड़ा रही हैं क्योंकि उनको गन बेचनी है। इस पॉइंट को भी आप देखिए, नो वॉर पैक्ट होना चाहिए हमारी कंट्रीज के बीच में, नो वॉर पैक्ट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे नहीं, और नौजवान को नौजवान से मिलने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर एक दफा मैं सबको अपनी तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ। और शाह साहब, यू आर ए ग्रेट मैन। और सईद गफर अहमद साहब भी मैंने देखा कि उनके वाकई अच्छी सोच का मुजाहरा किया।
पाकिस्तान में ऐसे भी लिटरेरी पर्सन हैं और वैसे आदमी जो है, वैसी शख्सियतों को हमें इन्वॉल्व करना है ताकि हमारी सोसाइटी में चेंज आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और कोई दोस्त कुछ बोलना चाहेगा? अरविंद बात करना चाह रहे हैं, प्लीज। जी जी मिस्टर अरविंद। अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी सर अब आ रही है आवाज? जी जी हाँ, अब आ रही है जी। क्या जी? जी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का, जिन्होंने ओपी शाह साहब को आज दावत दी और मेहमान खुसूसी जो है इन्हें बनने का मौका दिया। और शाह साहब की बातें हम सुनते रहते हैं। शाह साहब जैसे लोगों की आज हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे बड़े सगीर के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत कम लोग रह गए हैं आज हमारे इस खित्ते में जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी पे यकीन रखते हो, और ना सिर्फ यकीन रखते हो बल्कि उसको प्रोपोगेट करते हो आम आवाम के अंदर। और सईद जफर अहमद साहब ने नौजवानों की, तो ये बिल्कुल ठीक है जी, नौजवानों को आगे आना होगा। और ज्यादातर हमारे जो नौजवान हैं इस वक्त, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथों जिस किस्म का नैरेटिव उनको हर रोज परोसा जा रहा है, वो ना ही तो इस खित्ते के लिए और ना ही हमारी आने वाली नस्लों के लिए उसमें कोई फायदा है। यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई और बटाली साहब ने भी बात की कश्मीर के हवाले से। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है साहब कि जब तक मसला कश्मीर का कोई ऐसा हल, वो हल जो सबको, तमाम पार्टीज को काबिल कबूल हो, वो नहीं हो जाता, इस खित्ते में अमन आना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मसला कश्मीर को हम कुछ वक्त के लिए अगर बैक बर्नर पे रख के कुछ हमारे दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, और फिर बात जब आगे बढ़ेगी और ताल्लुकात इस हद तक आगे चले जाएं, उसमें सिरे फहरिस्त पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, हमारे दरमियान ट्रेड है, तो ये तमाम चीजें जब जो हमारे यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो उसके बाद हम मसला कश्मीर भी हल जो है वो कर सकते हैं। लोगों का जब पर्सनल इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है कि देखिए जी व्हाट इज एट स्टेक, अगर हम इसी लड़ाई और झगड़े से अगर कोई किसी मसले को हल करना चाहते हैं, तो लोगों को उससे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारा इसमें नुकसान क्या हो रहा है। और मॉनेटरी लॉस जो होता है वो मैं नहीं समझता हिंदू हो या मुसलमान कोई नहीं अपना चाहता। तो ट्रेड हमारे दरमियान हो, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुआशी सूरत हाल बहुत खराब है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती है तो ना सिर्फ इस खित्ते के लोगों का फायदा होगा, बल्कि वो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी होगा। अब बात ये है कि हम ये तमाम चीजें करें और इसके साथ साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज की भी बात हो जाए, जो पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल बंद पड़े हैं, डाउनग्रेडेड हो चुके हैं। तो उसके हवाले से मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसे आप मेरा प्रोटेस्ट समझ लें कि जी एट द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पीरियड अगर हम देखें इस बड़े सगीर में, मैंने जब से होश संभाला है उसके बाद कारगिल की जंग देखी है जी, तो उस दौरान भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इतने खराब नहीं रहे जितने आज हैं। हिंदुस्तान में ये बात खैर पूरी दुनिया जानती है कि कारगिल की जंग कैसे शुरू हुई, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को एक्सपेल नहीं किया। तो जो काम आपने 5 अगस्त 2019 के बाद किया है कि इंडियन एम्बेसडर को ही एक्सपेल कर दिया, वो दिन है और आज का दिन है। न जाने ऐसे कितने हजारों लोग होंगे जो हर रोज वीजे की तलाश में एक दूसरे के एम्बेसियों के बाहर चक्कर जो है लगाते हैं, और मायूसी के सिवा उनके मुकद्दर में और कुछ नहीं रखा। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इस पे नजरसानी करें
कि अपने डिप्लोमेटिक टाइज को भी बहाल करें। पाकिस्तान में आम आवाम को और खास तौर से आप जैसे जो बड़े हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, आपको अपने नौजवान नस्ल को ये भी मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत बताना चाहिए कि क्या वजह है कि आज 74-75 साल बाद हिंदुस्तान का जो नौजवान है, हिंदुस्तान की अक्सरियत जो आबादी है, वो राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे इस पूरे के पूरे खित्ते के लिए। एक वाकया मैं शेयर करना चाहता हूँ जी आप लोगों के साथ। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मेरा पाकिस्तान आना हुआ, तो मेरे इलाके के जो बड़े बुजुर्ग थे, नौजवान, वहां जाने की वो रास्ता, वो गलियां, वो लोग तो हम छोड़ चुके हैं बहुत पहले, अब उस तरफ कोई नहीं देखता। तुम क्यों देखते हो? और आज की नस्ल तो वैसे ही नहीं देखती है। तो मैंने कहा जी ये हमारा जो मुस्तकबिल है वो तब तक वो सही सिमत में नहीं जा सकता जब तक कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उस तरफ ना देखना शुरू करे। और जो गलतियां हुई हैं हमसे या उस पार भी, हमें उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। वी डोंट नीड टू शाई अवे फ्रॉम इट कि जी कुछ हुआ है माजी में, तो हमें बात तो करनी होगी। तो उन्होंने कहा को तो हमारा एक पैगाम लेते हुए जाना और ये कहना अपने वहां दोस्तों को। देखो यार आवाज को क्या हो गया? जी आवाज आ रही है मेरी? कहाँ गया? ये है सामने बैठा रहे। अरे इधर आ यार, बहुत अच्छी ये कहते हैं आवाज ही नहीं आ रही। योर स्पीकर इज आवाज आ रही है शाह साहब? जी जी हाँ मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मुझे तो उन्होंने जो मुझे बात कही, मैं उसको सोच सोच के आज भी बहुत परेशान हो जाता हूँ कि मेरे मुल्क में लोगों की ये कैसी जहनियत बन गई है। जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो उनसे उनकी जा रहे हो तो हमारा पैगाम लेते जाना, और उनसे ये कहना कि हम 1947 में भी इस बड़े सगीर के अंदर अक्सरियत में थे, हम आज भी अक्सरियत में हैं, लेकिन इस बड़े सगीर के मुसलमानों को और खास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमानों को ये गलतफहमी हो गई थी कि वो अक्सरियत में थे और उन्होंने उसी तरह से बिहेव किया है। तो उन्होंने ये कहा कि उनसे ये कहना कि अब हमने जो है मार खाना बंद कर दिया है, अब हम जो है मार नहीं खाएंगे। जब ये बात मुझे कही मेरे बड़ों ने और आसपास के लोगों ने, मुझे बड़ी हैरत हुई ये बात सुन के। अपने ऊपर, अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर मैं क्या अफसोस करूं साहब, सोच ही ऐसी बन गई है पिछले कुछ सालों में। और जिस तरह के बयान हमारे यहाँ पे मीडिया पे दिखाए जाते हैं, मुसलसल जो हमारे नौजवानों की जहन साजी की जा रही है उन हमारे मीडिया के हाथों, वो बेहद खौफनाक है। आज अगर उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, आज अगर हम अपने नौजवानों को आने वाले सालों में खुदा ही जानता है जी हमारा क्या मुस्तकबिल होगा। तो हमें चाहिए कि हम ये भी देखें कि हिंदू फंडामेंटलिज्म अगर आज बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। अपने लोगों को आप मेरी ये गुजारिश होगी कि आप उस पर भी थोड़ी बहुत रोशनी डाला करें कि एक बहुत बड़ी आबादी का ये मानना है कि जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है वो एक रिएक्शन है पिछले 74-75 साल में पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ है। आई डोंट नो आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इस बात पर यकीन रखते होंगे, मगर ये एक सोच है हिंदुस्तान में जो इस वक्त डेवलप हो रही है। और ये खित्ता जो है, देखें अगर हम जर्मनी की, तो जर्मनी की बर्बादी वहां के यहूदी नहीं बने, वहां की जब तक आपकी मेजॉरिटी कम्युनिटी फाशिस्ट नहीं हो जाती तब तक किसी मुल्क को खतरा नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान अगर कम्युनल हो जाएं तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। सिख भी कम्युनल हुए एक वक्त में, उनको भी कंट्रोल, वो माइनॉरिटी है। जब किसी मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी कम्युनल हो जाए तो उस मुल्क को फाशिज्म से कोई नहीं बचा सकता।
आई एम एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। तो शाह साहब जैसे लोग हैं, सैयद जफर अहमद साहब जैसे लोग हैं, आप सबको चाहिए कि अपने नौजवानों को थोड़ी सी आप जिस जहनी खुराक की आज जरूरत है वो उन्हें दें। उन्हें उन्हें ये बताएं कि मेरे बच्चों, हमसे, हमारे बड़ों से बहुत गलतियां हुई हैं जिसकी सजा हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। तुम उस रास्ते पे ना चलना। मेरे बड़े अच्छे जो है बुजुर्ग हैं, इन्हीं की बात पे मैं खत्म करता हूँ। मैं जब कराची आया जी आज से 3 साल पहले, तो हमारे जो जिनके यहाँ मैं मेहमान था, तो सलीम साहब तो सलीम साहब की पैदाइश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की है। अस्पताल में थे, तो मैं जब पहुंचा तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में वो एडमिट है। सलीम दादा भाई उनका नाम है और कराची के एक बिजनेसमैन है। हम गए हॉस्पिटल, उनसे मुलाकात की और वो पास ही में कुछ और लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे पहली दफा देखा था वहां पे, तो वो एक शख्स मुझसे पूछने लगे कि क्या नाम है आपका। तो मैंने कहा जी अरविंद। ये सुन के वो हैरत में आ गए। 5-10 मिनट तो वो कुछ बोले नहीं और फिर चुपके से मेरे कान में बोलते हैं, आप हिंदू हैं? मैंने कहा जी हिंदू हूं। तो मैंने ये कहा तो कहते हैं अच्छा, तो इनसे आपका क्या नाता है? तो सलीम साहब ने कहा कि मेरा बेटा है। सलीम साहब ने कहा कि मेरा बेटा है, हिंदुस्तान से आया है। तो नॉट बोरिंग यू। तो जब ये बात उन्होंने कही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं उस मुल्क में एक अनजान इंसान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक अपनों की हैसियत से बुलाया गया हूँ और अपने ही लोग लग रहे थे वहां पे। खैर, उन्होंने अपनी बीवी से कहा और बाकी घर वालों से कहा कि देखो भाई, मेरा ख्याल रखने के लिए अस्पताल में बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तुम जाओ अभी के अभी और अरविंद को घुमा फिरा के लाओ, सारा शहर दिखाओ अच्छी तरह से। हमारी तरफ से कोई अरविंद साहब, हम थोड़ा सा मौजू पर आ जाएं और इसको कंप्लीट करें ताकि और लोग जो हैं वो भी अपने ख्याल का या अपने सवाल का इजहार कर सकें। आपसे हम्बल एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। तो रात को काफी लेट थे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, हमने इस बंटवारे की, उस खून खराबे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। गलतियां कभी मत करना जो हमसे हुई, हमारे बड़ों से हुई। इस बात का ख्याल रखना कि जब कभी कराची आओ या पाकिस्तान आना हो, इस मुल्क को, इस शहर को, इस वापस जाओ तो वहां भी सबको यही पैगाम देना। तो मैं इसी पैगाम के साथ आज अपनी बात भी खत्म करता हूँ। सब कौम के बड़े हैं, अपने बच्चों को सही राह जो आप दिखाते आए हैं उसे जरा और खुलकर आप सबके सामने रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बातें बहुत सारी हैं, फिर किसी रोज करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ख्याल है ओपिशा साहब, लोगों के ख्याल भी आए। जो आपकी ख्वाहिश रही कि आप एक इंटरएक्टिव सेशन करना चाहते हैं, वो आपको हम शायद फराहम कर सकें। मैं अगर साहब से इजाज़त लूँ कि वो इस सेशन को कंक्लूड करें तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारे जो इस वक्त वजारत कर रहे हैं वो प्रोफेसर जाफर अहमद साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी, अगर आप मुझे इजाजत दें। नहीं, इजाजत तो सदर साहब देंगे। जी 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 जी, कहें आप। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सदर साहब जी जी जी, अब सुनाई देगी आपको। मैं एक सिर्फ तजवीज देनी है जाफर साहब और अभी अरविंद साहब ने भी। जी, मैं अपने आप को अनम्यूट कर चुका हूं
और जी शुक्रिया बहुत बहुत। वो कि मैं अपनी बात कह चुका था, लेकिन शाह साहब की गुफ्तगू पर दोबारा जब गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि एक रेफरेंस जो इन्होंने दिया उसको थोड़ा सा हम और बजा तौर पे गांधी जी का जिक्र किया कि गांधी जी कितने पार्टीशन के बावजूद वो दोनों खितों में अमन के कितने बड़े ख्वाहिशमंद थे, और उन्होंने तमन्ना व्रत रखा इसलिए कि पाकिस्तान को इसके हिस्से के जो भी एसेट्स हैं वो मुंतकिल हों। मैं इस दौरान कोशिश की कि मुझे जल्दी से मिल जाए। गांधी जी के नेशन पर कायदे आजम जिन्ना ने जो बयान दिया था वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। इतने ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स उन्होंने गांधी को पेश किए, और इस मौके पे हमारा जो सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार था डॉन, उसने जो एडिटोरियल लिखा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाके चीजें तलाश करें और ये पढ़ें कि उस वक्त क्या ख्यालात थे। कायदे आज़म का पूरा ये ख्याल था कि पार्टीशन के बावजूद वो बॉम्बे जाते रहा करेंगे, और हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके उन्हें बेहद पसंद थे, वो उनको विजिट करते रहेंगे। और किसी ने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि कनाडा और अमेरिका के जैसे करीबी ताल्लुकात हैं दो पड़ोसियों के, वैसे ही हमारे भी ताल्लुकात होंगे। यहाँ से मैं ये अर्ज करूंगा कि मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में कहा था कि अब हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो बरसगीर की यूथ होनी चाहिए, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। और इसी जमीन में दूसरी तजवीज़ मेरी ये होगी कि हम अपने अपने मुल्क में अपनी सही तारीख पढ़ाने की कोशिश करें। हमारी तारीख हमसे छीन ली गई है और हिंदुस्तान में उसे एक इंतहा पसंद तारीख बना दिया गया है, पाकिस्तान में उसको एक इंतहा पसंद तारीख बना दिया गया। बहुत ज़रूरी है कि तालीम को सेकुलराइज किया जाए, बहुत ज़रूरी है कि सही तारीख पढ़ाई जाए। तारीख में ऐसे वाक़यात होते हैं जब इंतहा पसंदी के को रास्ता मिल जाता है, लेकिन फिर तारीखी में आपको वो मरहम भी मिलेगा जो उस जमाने में भी अप्लाई करने की कोशिश की गई थी, अब भी अप्लाई करने की कोशिश होनी चाहिए, जख्मों को मुंदमिल करने के लिए और लोगों को नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हम यूथ को, नौजवान नस्ल को टारगेट ग्रुप बनाएं अपना, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सही तारीख पढ़ाएं, और तारीख को जो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट फोर्सेस ने हाईजैक किया है, तालीम को आजाद कराया जाए। शुक्रिया। माफ करें, मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा। कुछ बातें आपने कही साहब। हिंदुस्तान में जो तारीख पढ़ाई जाती है, एज लॉन्ग एज अभी तक तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने बातें तो बहुत की हैं। अभी कुछ महीने पहले ही पार्लियामेंट में उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने जो है तरमीम की है सिलेबस के अंदर, तो जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि हमारी ख्वाहिश तो है करने की, लेकिन अभी तक नहीं की है। तो अभी तक जितना भी सिलेबस है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती कि जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर सके। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बहुत झूठ फैलाया जाता है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। और कायदे आजम की आपने मिसाल दी, इससे पहले भी 11 अगस्त की स्पीच की बात हुई। कायदे आजम को चाहिए था कि वो अपनी 11 अगस्त की स्पीच को फॉलो अप करते। जब उनसे जनवरी 1948 शाह साहब, सिर्फ मुझे 10 सेकंड देगा, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब उनसे कराची बार एसोसिएशन में पूछा गया कि इस मुल्क का आइन क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जी हमने हमारा आइन 1300 साल पहले ही हमें मिल गया था, तो बेहतर होता कि वो 11 अगस्त की स्पीच को फॉलो अप करते। वन सनी डे डज नॉट मेक अ समर सर। तो वो एक बार कह देना, और एक वो ऐसी ऑडियंस उस वक्त थी उनके सामने,
ज्यादातर लोग जो थे बाहर से आए हुए थे, उनको देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए, ही वाज अ स्मार्ट मैन। उनकी ये स्पीच को भी कोट करें जो 30 मार्च 1940 में कानपुर में स्टूडेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कही, जब उनसे ये पूछा गया कि जना साहब आप जहां पाकिस्तान बना रहे हैं, बस सर थोड़ी ये प्लीज बात सुने। अरविंद साहब बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए ये ऐसा मौजू है जो एक शाह साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, जरा उनको प्लीज बात करने दें। और ये हमारा जी शाह साहब कर लीजिएगा, चलें चलें आप बात करें। I just want to make one or two comments. I'm extremely happy to be here this evening. The discussion has been meaningful. There are many positive things we need to build upon. There are many things which we don't agree, but let's work on the positive things. If we do that, we will be able to achieve something which we wish to achieve. I would like to remember Quaid-e-Azam with what he said on 11th of August 1947. That would help the two countries to work together and come closer. Number two, the emphasis of non-violence by Gandhi ji was very significant. The non-violence, you remember 1922 non-cooperation movement. A group of protesters, agitators were going about, and suddenly a group of policemen fired on them, and the agitators became so agitated. One of the police station, which resulted in the death of 22 policemen and 3. Now, this non-cooperation movement was very popular. You know, it caught the imagination of large number of people in India. Gandhi ji, who was the initiator of this movement, decided to withdraw, and against the desire of all his colleagues, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, I'm told even Quaid-e-Azam also told Gandhi ji, when the whole country has caught the imagination of this movement, you started it just because one violent accident. So you withdraw the movement which has received the support of large number of people. Gandhi ji said, he is not ready as yet for a non-violent movement. Let me educate and prepare the country. Now that's very important. In public life, if you stick to a principle, then you will find ultimately this will help you. If Gandhi ji has succumbed, कि ठीक है एक 20-22 लोग पुलिसमैन मर गए तो क्या हुआ है, इतने बड़े देश में लाखों लोग तो सड़कों पे आ गए हैं, it would have been a different, India would have witnessed a different situation altogether. But this faith in the principle of non-violence, this is very important. Those of us who are in public life and believe in non-violence, it is important that we should try and promote it as vigorously as possible. And Gandhiji's example of 1922 Chauri Chaura, much against the wishes of the senior Congress leaders. He said, Bapu chhod dijiye is baat ko. Lekin he said, no. What face do I show to the wives of the policemen who were burnt alive? I can't do that. So let's prepare the country for an, so that is important. One more thing, and I think that is what we need to understand. India and Pakistan are two sovereign nations, and both are
today nuclear weapons nations. The visit of Atal Bihari Vajpayee in 1999 to Minare, Pakistan, if there was any doubt in anybody's mind, that should be over. India is a sovereign nation, Pakistan is a sovereign nation. And that is what we need to remember. If we can build on these positive things, there are large number of forces. And Sayyid Jafar Ahmed Saab said something very pertinent. You know, the right asserting itself, the liberal and the left forces are not working as hard as possible. They are not getting the attention of the people they deserve. That is a matter of anxiety and worry, and that requires, it's not question of right, left, but what helps the common person is important. And if spread the message of goodwill and understanding, that will be very important. So let's on. Something which is positive, constructive, issues on which the common Indian has wrong with the Indian actions, with Indian statements, vice versa. But there are still many common things that we can build on. If Shoaib Akhtar's my home club, I would like to make sure that my home club, Kolkata Knight Rider, wins. And that's something on which we should build on. So this kind are important. And I would want to thank you, the organizer of this meeting, for giving me this opportunity of sharing and listening to several friends. It's not what I said was important, but for improving Indo-Pak relations. You know, last sentence, the book which if there is one central message, obviously there would be an approach. Important Pakistanis contributed, important Indians contributed, but except one son, 49 out of 50 have suggested dialogue, dialogue, dialogue. Now, if we can build on this message of dialogue, imagine there are different approach, but everyone suggests this dialogue, except talk. Let's continue uninterrupted and uninterruptible. If we can work on this, that would be something that we will be proud of. Gandhiji, obviously, for me, has always been a guide, someone whose life has been a message. And certainly, we can do quite a lot following his philosophy in this subcontinent. Thank you very much once again. Welcome. You are most welcome. Please. Thank you very much, everybody. And thanks, Irtiqa, first of all, for putting me into this chair to preside over and talk to. I'm thankful to Shah Saab for his wonderful lecture and the issues, the core issues that you touched upon. And especially in the end, you said dialogue, dialogue, and dialogue. I think that is a wonderful idea. Dialogue is the only solution that people of Pakistan and India, or India or Pakistan, can carry on to reach some solution, in my view. You know, because we had, if you remember, Dr. Jafar must be fully aware about the Pakistan-India Peace Forum. Karam Matali used to lead that, and we a number of times tried to come to India, and you know, because that had given us a kind of support, the people support, the masses support from both sides.
by traveling from here to India and people coming from there. So that was actually something which still is in the vogue, and we need to have that kind of dialogue, that kind of exchange of people. That, in my view, I think. Now we have to, in fact, we have seen the religious extremism. Both sides are now, things are going on, and being two big nuclear powers and neighbors, we carry on this extremism and the threats of war and disputes among each other. I think that's not going to solve the problem. That is, on the contrary, will increase these things in a very, take them to bad shape, in my view. Because we have these large armies and large nuclear weapons, and which we are using. Fortunately, we have not been able to use up to this time, but we should not. We should refrain from using such kind of weapons so that they can. Instead, we may spend that money on the poverty solution strategies and the social sectors that we need to develop for the poverty. In the South Asia, 1.7 billion population, there is 35% of people living below poverty line. That is awesome. And we have to see that now if these things happen, it will be very difficult for us. I was reading some reports of the World Bank, and one of the reports is of the view that there is a trade potential between India and Pakistan worth 35 billion rupees, $35 billion. Now, if that kind of, that is a game changer. Don't you all think that's a game changer if we have stopped the trade? And past few months, we had some discussion in our country also by two different prime ministers and the other ministers and people about this. But trade with India and Pakistan with each other, I think it would be very important, because the issues that we are facing are global warming, water depletion, pandemic, geopolitical conditions, poverty, water resources. All these are so important issues that if they are not touched and people if don't get benefit out of that, the whole amount, the money, budgets which are being spent like that are, vestige of these things. Therefore, both countries are facing the peace problems, climate change, global warming, as I said. So we have to look at that very carefully. I think the dialogue and the discussion between the people, between the governments, between the prime ministers is the only solution, because even Kashmir is a issue, is a core issue now at this point. But that also we need to discuss and sit and discuss, and that will be the only solution that things can be addressed. The cultural diplomacy, I would emphasize, like Kartarpur in Pakistan, we would like to have more like Khwaja Naziruddin, Muinuddin Chishti, Data Darbar, Shah Latif. This kind of two-way traffic of the people can also be seen that very well. Like that, cricket and sports, as Shah Saab also mentioned. You have mentioned in your paper also a few good things, very good things that I read through now. So these things need to be addressed fully well, otherwise it will be difficult. Cultural exchange programs you mentioned are very important.
the professors and teachers, the students, different groups, writers, conferences, book fairs. These things are also a need of the time, so that both countries, the people should come nearer. And as you said, as Dr. Jafar yourself, Gandhi and Aijaz wanted to live in Bombay. Gandhi, they wanted to have the friendship. But unfortunately, in the last 75 years, we have not achieved that friendship, but we have gone backwards. SARC, for example, is another forum which has completely declined, and we are not. It used to be a better forum where people used to come and sit and discuss, and we had some sort of institutions established throughout South Asian countries, and we were able to do it. So in my humble view, these are some of very important things that one should address. And I quite agree with Mr. Rattali, Sahar and Saab, Dr. Jafar, your good self, that you people have brought so many issues which need to be addressed and dialogue, so that we are able to. These are my some humble views, and that I have presented, and I would like to thank everyone again and Irtiqa for organizing such a wonderful forum. And our Irtiqa Institute will continue by doing these kinds of things. And at India also, I think it will be important to have the Shah Saab's forum to carry on this kind of dialogue between each other, so that things can be addressed very well. Thank you very much. मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत ये रहा हमारा आज की शाम, और मैं समझता हूँ कि जिस तमाम बातें दोस्तों ने कही हैं, उसमें मुझे सबका सिर्फ शुक्रिया अदा करना है इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और हमजा अलवी मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से। वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं हर साल इसको मनाने के लिए। और मैं प्रोफी शाह साहब से कहूँगा कि जिन दोस्तों को आज आपने हिंदुस्तान से दावत दी है, मैं चाहूँगा कि उनके हमें कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास हों, ताकि आइंदा आने वाले जो फोरम्स हैं, हमारे जो डिस्कशंस हैं, हम उसमें उनको बुला सकें, पहली बात। दूसरी बात है कि उनसे जान सकें कि उनके अपने अपने शोबे जो हैं ज़िंदगी के वो कौन से हैं, ताकि इर्तिका इंस्टीट्यूट के ज़रिए से यहाँ के अवाम जो हैं वो भी उनकी उन खिदमात से जो है वो आगाही हासिल कर सकें, वाकिफ़ हो सकें। शाह साहब का बेइंतहा शुक्रिया। मैं सदर साहब की इजाज़त से इजलास को जो है वो ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, और हम लोग फिर ज़रूर जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुलाकातें जो हैं अपनी जारी रखेंगे। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।